Today in this session, I am going to discuss about the three address code generation for loop, or you can say that intermediate code generation for loop. So as we have discussed that for any control statement, whether it is if, it is while, it is for loop, it is do while, it is switch cases, all these control statement are implemented through if then else cases. So if you know the generation of any code, any three address code using if then else, you can write any three address code of any control statement. So for loop is also like a three address code. So I am going to discuss here. In for loop, there are two things. First is the initialization and the condition and increment. So it means that I is starting with 0, the loop will go up to 20, and then for each iteration I will be increment by 1. So it means that if I is equal to 0, statement will be executed. If I is equal to 1, the statement will be executed, and so on. If I is less than 20, then the statement will be executed. Otherwise, uh, if I become greater than 20, the execution will be halt and switch to the next statement. Okay. So let us take an example for I is equal to 0, I less than or equal to 20, and I plus plus A is equal to B plus C. Okay. So for that, the three address code will be: first statement will be initialization of 0. It means I is equal to 0. Second statement will be t1 is equal to I. It means the value of I will be passed to t1, that is 0. Second statement will be if t1 is less than 20, go to we will leave the next state because we don't know where it will move. But if it is false, if it is false, then it will go to the next program statement. So we will write here go to and leave the statement number. In fourth, if t is less than 20, the statement will move to here, and it will be executed like t is equal to b plus c, and fifth will be a is equal to t2. The statement will be executed. Now after executing the statement, the I will be increment by 1. So here we have taken t1. So t1 will be incremented by 1, and again it will check whether it is less than 20 or not. It means it will move to go to 2, go to 2. ओके. सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? हेयर इट विल बी रिटर्न 4 स्टेटमेंट. मीन्स इफ t1 इज लेस देन 20, इट विल मूव टू स्टेटमेंट नंबर 4, and last one is the go to next. So if t1 is less than 20, if it is false, means t1 is greater than 20 or equal to 20. Okay. So it will be it will be uh, it will move to next statement. Okay. So here we will write go to 8. So it will be the three address code for this particular for loop will be this. ठीक है. तो I am just repeating it. I is equal to, firstly I will write I is equal to 0. Then we will put the value of I into t1. If t1 is less than or equal to 20, it will move to statement execution, that is the fourth statement. So we will write here go to 4.
If that statement is wrong, it will move to next program statement, and okay, when the statement executed, the increment of the t1 will be done here. Okay, and again we will check the condition, and the loop will be continue until unless t1 is less than or equal to 20. Sometime, as I have written here that t1 is less than or equal to 20, sometimes it is better to write like that. If t1 is less than 20, okay, go to, if it is false, then again we will check t1 is equal to 20, then go to, and if it is false, then go to next, and here go to 4 and go to 4 statement. So you can write directly t1 is less than or equal to 20, or it is better to write like this: t1 is less than 20. If it is correct, then statement execution. If it is not correct, then we will check it is equal to 20. If it is correct, it will execute the statement. If this is wrong, then it will move to the next statement. So by this we can write the 3 address code for any for loop. So now I am going to move in switch case statement. In switch case statement, it is also implemented through just like if then else case. So firstly we will initialize the switch statement, that is if switch just like that switch I plus j, then there are different cases, case 2, case 3, and there is a default. So if it is 1, it will move to case 1. If it is 2, then it will move to case 2. If I plus j is 3, then it will move to the case 3. If any case is not satisfied, it will move to the default. So it is also implemented like if then else statement. Okay, so in switch cases there is a statement given, condition given, and there are various cases. So it is also implemented through if then else statement. So I am taking one example, just like switch I plus j, and there are case 1, that is x is equal to y plus z. Then there is a default, that is p is equal to q plus r, and case 2 is u is equal to v plus w. Okay, so this is the statement for which we have to generate the 3 address code. Okay, so what we have to do, firstly we have to initialize this statement. Okay, that is t1 is equal to I plus j. सेकेंड, हाँ, और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि द स्विच केसेस इज इम्प्लीमेंटेड लाइक डू वाइल केस. इट मीन्स दैट कि फर्स्टली ऑल स्टेटमेंट आर रिटन, आफ्टर दैट वन बाय वन वी आर गोइंग टू चेक द कंडीशन. मीन्स ऑल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एंड देन द कंडीशन इज चेक्ड. ओके, सो हेयर गो टू, अभी हम बताएंगे कैसे हो रहा है. थर्ड क्या हो जाएगा, now all the statements are written. t2 is equal to y plus z, and fourth become x is equal to t2. now fifth will be go to. अभी छोड़ देते हैं स्टेटमेंट नंबर. इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद है हमारा p प्लस क्यू आर. हम यहाँ पे लिख देते हैं सीधे सीधे, जिससे कि अब जो हमारा ये है, देखो ये क्या कहते हैं, सेकंड स्टेटमेंट है p इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज u इज इक्वल टू v प्लस डब्ल्यू. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिक्स्थ स्टेटमेंट लिखेंगे,
क्या था, क्यू प्लस आर, पी इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। सेवेंथ क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू T3। एट्थ क्या हो जाएगा, गो टू। नाइन्थ क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल टू बी, केस जो टू था, ठीक है, जो केस टू था दैट इज यू इज इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू T4 इज इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू। टेंथ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू T4। एंड 11th क्या हो जाएगा, गो टू। ओके, अब देखो हमने क्या किया, सारे स्टेटमेंट हमने u y प्लस जेड था, ठीक है, p q प्लस आर था, b प्लस डब्ल्यू था। ऑल स्टेटमेंट आर, दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ स्विच, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द डिफॉल्ट, and this is the case 3. okay, now अब हम लोग क्या करेंगे, we will check the condition if T1 इज इक्वल टू, इसका मतलब T1 क्या है हमारा, हमने यहाँ पे पहले लिख लिया था, क्या चीज़ था, T1 हमारा क्या था, I प्लस जे था। अगर T1 हमारा यानी कि केस 1, इफ T1 इज इक्वल टू 1 है, ठीक, इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट होगा, केस 1, और केस 1 जो है हमारा वो क्या है, 3, थर्ड है, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, गो टू 3। 13 क्या हो जाएगा, इफ T1 इज इक्वल टू क्या है हमारा, T1 इज इक्वल टू क्या है हमारा 3, तो क्या हो जाएगा, गो टू, इसका मतलब क्या है, केस 3, ठीक, हमने केस 1 और केस 2 था, अच्छा ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। इफ T1 इज इक्वल टू 2 है तो क्या हो जाएगा, केस 2 एग्जीक्यूट होगा, और केस 2 हमारा कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है, ये केस 2 कर देते हैं, केस 2, इसका मतलब ये कहाँ पे चला जाएगा, गो टू 9। और अगर क्या है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, केस 1, इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, केस 3, केस 2, और अगर ये दोनों केस इफ इट इज़ नॉट सेटिस्फाई, इसका मतलब क्या है कि क्या होगा, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। सो गो टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा डिफ़ॉल्ट था तो गो टू 6 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 15 नंबर पे, गो टू नेक्स्ट, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि जैसे ही हमारा क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये क्या हो जाएगा, गो टू 15, मतलब नेक्स्ट पे चला जाएगा। ये हमारा जैसे एग्जीक्यूट होगा, ये भी गो टू नेक्स्ट पे चला जाएगा, ये भी हमारा गो टू नेक्स्ट पे चला जाएगा, एंड सो ऑन। तो एज यू सी दैट द switch case is also implemented through 3 address file, and it's very quite easy, you can write very easily the 3 address code of switch case statement. Firstly what you have to do, you have to do the initialization process, and then क्या करना है आपको, you have to write the all the statement executed under the cases and default. After that you have to check the condition one by one, which case is true you have to execute that statement, and if any case is not